Hello guys, I'm Sumit Nahak. I had secured all in the rank 691 NEET 2021 and I'm currently teaching you rotational motion physics. So last तीन lecture रे तमु center of mass पढ़ेली, motion of center of mass पढ़ेली, linear velocity and angular velocity. So with the relation of first period में तमु सब topic का introduction देती थी, but center of gravity introduction दे नथली. आज हमें पढ़िया जे center of gravity पढ़िया, then हमें moment of inertia पढ़िया, then हमें पढ़िया translational motion and rotational motion का analogy. किमित दीटा जाकर दिजन जाको related. Okay, so guys, let's start with center of gravity today. So center of gravity का meaning क्या है? Center of gravity का general meaning होती है an imaginary point on an object. An imaginary point on an object. Fluid object is like an imaginary point on an object where the mass of all the body is concentrated. Where the mass of the whole body is supposed to be concentrated. So like the center of gravity definition pada any imaginary point on the object where the mass of the body is supposed to be concentrated. So definition देखिए किसी पिला डाउट होती है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रे डिफरेंस कौन है सेंटर ऑफ मास से भी तो मुझसे नीचे आ गई with the mass of the whole body is concentrated the center of gravity difference कौन है ना आगे पढ़िया okay so that's the interesting about this the center of gravity का meaning कौन with the mass of the body is concentrated for for example ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ rod ନେଇଲି uniform mass rod तो यूनिफॉर्म मास रॉड जो देता हूँ तार मास के सब कोडी कंसंट्रेट रहे सेंटर रे तार बट जदि मो सेम यूनिफॉर्म रॉड सेम यूनिफॉर्म रॉड को दीटा वेट लगे देली ओके एपट लगेली 10 केजी रो वेट एपट लगेली 4 केजी रो वेट तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोडी मूव करियो और एपट ऑब्वियसली एपट मूव करियो जपड़ा अधिक वेट रे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीनिंग कोन जोठी तार अधिक मास जोड़ी कंसंट्रेट रहा तो जेते 10 केजी अधिक वेट अछि एपटे से शिफ्ट हो माने सब ट्राई करियो जो ऑब्जेक्ट तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिया पे ट्राई करियो से ऑब्जेक्ट को तुम गोटे अंगूठे धरिया पे ट्राई करियो अंगूठे धरले से को पोजीशन में स्टेबली रोज जते मोड फॉर एग्जांपल गोटे पेन नीजियो पेन रे एपट साइड बना केप लागि तो सब देखियो जेतला पेन टाको तुम एपट टिकी के पाडो माने मिडिल पॉइंट जो धरिया ट्राई करियो केबेले पेन ना स्टेबल पोजीशन में रहइबो तो पेन टा तुम गोटे सेपट साइड केप थाउची सेपट साइड तार हम पेन टा धरिया ट्राई करियो सदल से स्टेबल पोजीशन है तर मीनिंग कोन चप्पल टिका अधिक वेट न तर सेंटर ऑफ ग्रेविटी टा मिडिल रो सेपट को शिफ्ट हो ओके तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रो डेफिनेशन बुक रो थरा देखियो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रो प्रॉपर डेफिनेशन ओके तो center the point that support the G center of gravity एडा को तमे पढ़ले यूनिफॉर्म मास निजे कोन थिला यूनिफॉर्म मास रे सब सेंटर रहयो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बट फॉर एग्जांपल मोड नॉन यूनिफॉर्म मास नॉन यूनिफॉर्म मास एडा गोटे मन कर नॉन यूनिफॉर्म मास तो नॉन यूनिफॉर्म मास रे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किमिति मेंटेन करे एडा होची मन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल एम एपटे से तळु को सेंटर ऑफ ग्रेविटी माने कोन ताकू से पी फोर्स रे एक्ट अट्रैक्शन मिलछि ओके आ ऊपर एडा गोटे रिएक्शन मिलछि आर जोडा कि बैलेंस करछि ओके तो नॉन यूनिफॉर्म मास रे ए नॉन यूनिफॉर्म मास रे मन करो एडी हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम को रिलेशन करके एबरटी पढ़िया ओके तो नॉन यूनिफॉर्म मास में मन को चारटा ऑब्जेक्ट रखलु ओके तो मन करो m1 plus m2 is greater than m3 plus m ओके m1 plus m2 रो वेट टा m3 plus m4 रो वेट रो अधिक ताले कोन हबो एबे ये गोटे टॉर्क प्रोड्यूस करे ट्राई करियो ना नहीं कमे ना ये सिना एबे जे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रे थिला बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम रे थिला कि थिला रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बट जता हम वेट दे देले एपडे m1 m2 एपडे m3 m4 से रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रही परियन जदी फॉर एग्जांपल m1 plus m2 is greater than m3 plus एटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में केबेले रही परियन if it is in rotational equilibrium m1 plus m2 will be equal to m3 plus m4
ओके जब से रोटेशनल इक्विलिब्रियम रे अच्छी जदि नाही तार वेट 10 ठीक तो एमार टॉर्क किन काढिया केते से टॉर्क अप्लाई करछि मन कर एरे डिस्टेंस r1 आर डिस्टेंस r2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर डिस्टेंस r3 आर डिस्टेंस r4 सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो समस्त टॉर्क केते काढिया टॉर्क किन काढिया टॉर्क applied by the masses torque 1 torque 2 torque 3 torque 4 torque 1 equal to केते हबो r1 into f1 f1 ना सबले कोन हबो एडी हम गेस करि पछ f1 ना केते m1g m1g m2 पर केते फोर्स पड़छि m2g ताई सब टॉर्क सब तडे टॉर्क वैल्यू r2 क्रॉस f2 टॉर्क 3 रो r3 क्रॉस f3 टॉर्क 4 रो r4 क्रॉस f ओके सब जार वैल्यू तार ऑब्जेक्ट जो मास थिला ता ऊपर डिपेंड f1 रो वैल्यू हो m1g f2 रो वैल्यू हो m2g f3 रो वैल्यू हो m3g f4 रो वैल्यू हो m4g ओके नॉन यूनिफॉर्म मास रे हम बोलछन हाउ गुड इज बोले रोटेशनल की नॉन यूनिफॉर्म मास रो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पड़ले यूनिफॉर्म मास रो पड़ले हाउ गुड थिंग्स मन रखा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक में डिफरेंस देखिया डिफरेंसेस हां इट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़िया करूम आउडी जिंस तुमको क्लियर करियो छ the total gravitational force about the total gravitational torque about the center of gravity is always zero okay मन्ने कर मु एडा को जितला कहू फॉर एग्जांपल एडा जदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म मास हो कि नॉन यूनिफॉर्म मास हो जो मास हो तार सेंटर ऑफ ग्रेविटी रे जदि सब्जेक्ट रेस्ट अछि से पॉइंट रे टॉर्क ता सबले जीरो हो जति की क्लॉकवाइज मोशन जति की एंटी क्लॉकवाइज मोशन ओके so torque applied by the masses around the center of gravity केता हो torque 1 plus torque 2 will always be equal to torque 3 plus torque 4 okay torque 1 torque 2 कौन प्रोड्यूस करथिले 1 और 2 टा कौन प्रोड्यूस करथिले एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जेते सॉरी torque 3 torque 4 कौन प्रोड्यूस करथिले clockwise torque with setup. So, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ the total gravitational torque about the center of gravity is always zero. ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା differences between center of mass and center of gravity. ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁନିଫର୍ମ ମାସ୍ ନେଇଥିଲେ ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ମାସ୍ ରେ center of mass ଯୋଉଠି ଲାଗି କରିବ center of gravity ସେଇଠି ଲାଗିବ. ଓକେ ୟୁନିଫର୍ମ ମାସ୍ ରେ ଯଦି ଗୋଟେ small डिफरेंस देखिए अपन मु तो मोड बड़े एग्जांपल दो बड़े यूनिफॉर्म मास से मतलब सब बड़े सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट लाइक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी coincides with the center of mass in uniform gravity और gravity field ओके यूनिफॉर्म मास रे और सीधे दी यूनिफॉर्म ग्रेविटी अछि इने यूनिफॉर्म मास ऑब्जेक्ट if a uniform mass object is in a uniform gravity space uniform gravity space तारा center of mass and center of gravity will be on the same point okay I hope that तुम clear ହେଲା ଏବେ ଆମେ next concept କୁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଯିବି center of mass center of gravity ବିଷୟରେ କହିଲି ଏବେ ଦେଖ next topic ରେ center of mass center of gravity ହେଲା difference ତମକୁ କଣ କେମିତି ଜାଣିବା uniform mass ନା same ହେଲା but difference କେମିତି ଜାଣିବା ଏଟା ମନେ କର earth ତ earth ରେ ଯଦି ମନେ କର ଗୋଟେ ମୁଁ small ଏଟା ଗୋଟେ small object जो ऑब्जेक्ट गुड़ा आखि देखा जाउछ ହେଲା ନା ସେ ऑब्जेक्ट रो सेंटर ऑफ मास स्टेट थिबो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले बट फॉर एग्जांपल ଗୋଟେ ବଡ ऑब्जेक्ट ନେଲି ବଡ इन ऑब्जेक्ट इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जार की लेंथ होची 50000 किलोमीटर ओके हमें कोन जानछनी जते हम अर्थ उठु होई जिबा तार ग्रेविटी कम जिवो ताले जदि ऑब्जेक्ट जतो जे एती पर्यंत थिला ग्रेविटी अधिक मानकर जीबी थिला एटी ग्रेविटी जीए हमें कोन जानछनी जीबी इज ग्रेटर देन जीए ओके तो ए ऑब्जेक्ट देखियो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एडी लाई करियो तळे लाई करियो कमे एडी तक अधिक फोर्स मिलछि एडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कला बट सेंटर ऑफ मास तार सबले मिड पॉइंट रे बुझि परलो सेंटर ऑफ मास सेंटर ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दा तार सबका
बॉडी का जो वेट टा अधिक वेट टा कोडी अछि ता ऊपर डिपेंड करे वेट में हमें ग्रेविटी आस ओके बट सेंटर ऑफ मास पेन से मास सेटा ताको ग्रेविटी डिपेंडेंट ही हो मास इज नॉट ग्रेविटी डिपेंडेंट ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ସବୁବେଳେ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଯିବା ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝା ପଡିଲା ସେଣ୍ଟର ଅଫ ମାସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଗ୍ରାଭିଟି ଏଇଟା ହିଁ ଅଛି ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ମାସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଗ୍ରାଭିଟି ଓକେ आपको रिलेटेड अबाउट न्यूमेरिकल समय करिया एग्जांपल नंबर 6.9 कौन को एग्जांपल नंबर 6.9 पे a 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall okay এটা হচ্ছে ওটা frictionless wall a 3 meter long ladder weighing 20 kg leans on a frictionless wall its feet rest on the floor 1 meter from the wall এটা ডিসটেন্স কেতে 1 মিটার যদি এটা 3 মিটার এটা 1 মিটার আর লেন্থ কেতে হবে पाइथागोरस थ्योरम लगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस এটা কোন लेंथ दे दोछि a b c ab स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू केते जो 3 रा स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 तो ab रा लेंथ केते आछियो 2 रूट 2 मीटर तो लिखि दियो 2 रूट 2 ओके तो एबे देखो तबे कଣ its feet rest on the floor and 1 meter from the wall as shown in the figure find the reaction of the forces of the wall and floor okay तो ये जो लॉन्ग लेडर टा अछि 20 kg रो आर मास एटी कंसंट्रेट हितो तो एपडे गोटे तळु फोर्स फोर्स जति फोर्स पास तमे देखि परछो तति फोर्स लिखि लिखि चलो डब्ल्यू वॉल टा ऊपर गोटे नॉर्मल फोर्स होते एपडे F1 आको एटा एटा सिना फ्रिक्शनलेस थिला एटा तो फ्रिक्शन अछि ना रो तो ये फ्रिक्शन फोर्स को एपडे पड़छे F होची फ्रिक्शन ओके आको ऊपर ग्राउंड रो गोटे नॉर्मल फोर्स ऊपर मिलछे नॉर्मल फोर्स आ फ्रिक्शन और नॉर्मल रो रिजल्ट एंड होची एटा मन करो F2 होची फ्रिक्शन और नॉर्मल रो रिजल्ट तो हम एटी कोन कोन काढिया अछि n रो वैल्यू काढिया होईची आ F1 रो तो अब हम केमि काढिया फॉर एग्जांपल एटा हमरो ट्रांसलेशनल एग्जांपल कोन एटा होची ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अछि ऑब्जेक्ट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अछि तार मीनिंग कोन ऊपर जति फोर्स पड़छि n माइनस तळु जति फोर्स पड़छि w इज इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू w तो n रो वैल्यू केते w पे हमर मास अछि तार 20 kg ग्रेविटी अछि 9.8 मास अछि मास टू ग्रेविटी मास अछि 20 kg ग्रेविटी अछि 9.8 तो नॉर्मल पळा तो n रो वैल्यू पळा आसला n रो वैल्यू केते 196 न्यूटन 196 न्यूटन ओके तो एबे नेक्स्ट टाइम एबे कोन देखिया ये ऑब्जेक्ट ता ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रे तो अछि आ सहित से रोटेशनल इक्विलिब्रियम रे भी अछि तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे ऑब्जेक्ट को एपड़ देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे को कोन कोन फोर्स मिलु ओके कोन कोन फोर्स मिलु रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे ताको से जति ताको फोर्स मिलु सेटा तो हमें एतरे नबा कोन नबा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जति माने मु पॉइंट ऑफ रेफरेंस 3 होची ओके ताको कोन कोन फोर्स मिलु रोटेशनल इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल मु एडी दीटा फोर्स नेली F1 जोडा की मते प्रोड्यूस करछ F1 टा कोन दोछ कि कोन दबो एंटी क्लॉकवाइज और W टा एडी कोन प्रोड्यूस करियो मो पे तब एडा एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कला W टा कोन प्रोड्यूस करियो पड़े क्लॉकवाइज W टा क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करियो तो F1 माइनस W1 रो वैल्यू 0 हो जेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम अछि तो मोर पॉइंट ऑफ रेफरेंस यदि मु एडा नेली एबे एबे हम कोन करिया एडा दीटा ऑब्जेक्ट को रिलेट करे ट्राई करा F1 और F1 और W पर फोकस करो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अछि मो पॉइंट ऑफ रेफरेंस में C मोर पॉइंट ऑफ रेफरेंस C होची मोर पॉइंट ऑफ रेफरेंस C जदि मोर पॉइंट ऑफ रेफरेंस C पॉइंट रे से कोन करछि C पॉइंट रे F1 टा कोन प्रोड्यूस करछि पॉइंट C रे F1 टा कोन प्रोड्यूस करछि एंटी क्लॉकवाइज बट W टा कोन प्रोड्यूस करछि पॉइंट C रे क्लॉकवाइज W टा सॉरी क्लॉकवाइज पेपर देखि देते W टा C पॉइंटर कोन प्रोड्यूस करछि क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज F1 टा एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करछि बट W क्लॉकवाइज ओके तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन सेम होबा पड़ियो तो F1 टा F1 रो टॉर्क केते टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 केते हो F1 into
परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पॉइंट को f1 ର परपेंडिकुलर डिस्टेंस केते 2 √2 तापर टॉर्क u2 weight w w ର परपेंडिकुलर डिस्टेंस केते हो एठो w ର परपेंडिकुलर डिस्टेंस एठो केते हो 0.3 रेफरेंस रे ए डिस्टेंस ता नबना नै w को ए पॉइंट रेफरेंस रे w रो एता केते हो एटा जदी पूराटा 1 मीटर थिला एटी जदी परपेंडिकुलर दबा 1 रो हाफ केते हाफ w into 1/2 ओके तो एबे जेहेतु ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम रो अछि f1 into 2 √2 equal to w/2 हाँ तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो ऑब्जेक्ट अछि तर टॉर्क ड्यू टू f1 and torque due to w is same so f1 into 2 √2 is equal to w/2 ओके तो एठु हमें w रो वैल्यू त हम पाखर अछि w रो वैल्यू कोन थिला 20 into 9.8 तो मैंने ऑब्जेक्ट रो मास हमु गिवन अछि तो एटी f1 रो वैल्यू भी आसी f1 equal f1 equal to w into एपटे आउटे 2 √2 असला w रो वैल्यू हम पाखर अछि 196 divided by 4 √2 is equal to 34.6 न्यूटन ओके तो हम एडी कोन कडेतला f1 नाउ f1 नाउ एंड वैल्यू कडेतला क्वेश्चन के एल नाउ f1 रो वैल्यू कडेतला तो बारी पडला एंड वैल्यू 196 न्यूटन एंड वैल्यू 196 न्यूटन अब f1 रो वैल्यू 34.6 न्यूटन ओके देन हमरो एबे सेंटर ऑफ ग्रेविटी विषय जति पढियतला पढि सारचंदी एबे हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करिया नेक्स्ट टॉपिक हमरो अछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी 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 इंपोर्टेंट 3 स्टार इंपोर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो बहुत क्वेश्चन आसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भलसे पढिया तमे ट्राई ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मु तुमको इंट्रोडक्शन वीडियो रे मु किछि आईडिया देथिली मोमेंट ऑफ इनर्शिया विषय रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तला में एनालिसिस रे देखिया ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टा कहा को ता कहितली मु मास तो तोर मन अछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होचे सेम इज मास इन ट्रांसलेशनल मोशन तो मास कोन थिला ट्रांसलेशनल मोशन जदि हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जिबा मास कोन थिला एबिलिटी of the body to resist the change in its state. Okay. For example, जदि ऑब्जेक्ट टा रेस्ट अछि सी रेस्टिंग रहइबो जदि सी मोशन अछि मोशन रे रहइबो जदि से गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अछि से सेम डायरेक्शन रहयो until an external forces apply एटा होतला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करिया पई मास रो डेफिनेशन दिया थिला बुझ पछ ना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करिया पई मास डेफिनेशन दिया माने ए सब जाक को जो से कंटीन्यूअस स्टेट रे रखुची के रखुची तो मास माने गोटे एग्जांपल जब तुम गोटे पेंसिल लबो पेंसिल को फोर्स दबो आ गोटे तुम मु देबी गोटे अलमीरा ऊपर फोटो तो कहा को तुम इजीली मूव करियो ऑब्वियसली पेंसिल को कम पे ना पेंसिल ना मास कम से कम रेजिस्ट कर बट गोटे अलमीरा को तम फोटो अधिका फोटो पड़े कम से अधिका रेजिस्ट कर तार मोशन बुझ पालो एडा होचे मास रो डेफिनेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो डेफिनेशन कोन रोटेशनल मोशन जे के तार तार इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द रोटेशनल मोशन इन इट ओके मास ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन कोन ओ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने होची इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू resist its rotational motion ओके तो मास रो डिफरेंट मास सलगेतला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला होची टोटल मास इनटू r स्क्वायर सेति आमे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एडो को आउर जदी करबे बेटर आउरी देखो मोमेंट ऑफ फोर्स पे हमें कोन करथिले फोर्स इनटू एक्सिस रो जते डिस्टेंस हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करथिले सेम दी मोमेंटम पे हमें कोन करथिले मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करथिले मोमेंटम फोर्स को कोन दे डिफरेंट
तार एते कण मोमेंट ऑफ फोर्स एते कण मीनिंग कण टॉर्क मोमेंट ऑफ मोमेंटम एते कण एंगुलर मोमेंटम ओके सेम सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सब हम कोन करन जहार मोमेंटम हम काढे ताकू हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करन सेम सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढे पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट कर जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोन करिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस रो स्क्वायर इट से भी खाली मल्टीप्लाई स्क्वायर ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो डेफिनेशन क्लियर ला an ability of the object to resist its motion okay ଯେମିତି ମାସ୍ ଥିଲା ମାସ୍ ଯେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ତାର ରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ରେଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ମାସ୍ ମୋଶନ ଥିଲା ମୋଶନ ଡାଇରେକ୍ସନ ଟୁ ସେମ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଓକେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇନର୍ସିଆ ମାସ୍ ଥିଲା ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇନର୍ସିଆ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇନର୍ସିଆ ଏଟା ହଉଛି ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇନର୍ସିଆ ଯଦି ଆମେ ଏସଆଇ ୟୁନିଟ୍ କରିବା କଣ ଆସିବ କେଜି ମିଟର ସ୍କ୍ୱାର केजी मीटर स्क्वायर आपको हम जब डायमेंशनल लिखिया m1 l2 t0 डायमेंशनल इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होप तुम की डेफिनेशन और तार फार्मूला क्लियर दिखे मु तुम कहितली एटा को आते मु रिपीट करछे ओके तबे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें डेरिवेशन करिया शिक्षा अलग अलग ऑब्जेक्ट रे किंदी किंदी डेरिवेशन तार टिके कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन बट हमें इजीली लर्न करिया तो मेरा को पड़ियो हमु लर्न करिया पड़ियो ओके तो से डेरिवेशन को जे अगर मु तुम आउडे कांसेप्ट कहया चाहूँ छे रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन रो डेफिनेशन जदि मनकर एडा ऑब्जेक्ट एडा होचे एक्सिस ऑफ रोटेशन पार्टिकल्स मनकर एडा होचे m2 m1 पार्टिकल एडा होचे m2 पार्टिकल एडा होचे m3 पार्टिकल एडा होचे m4 पार्टिकल मन मन एति डिस्टेंस अछि r1 डिस्टेंस अछि या r2 डिस्टेंस अछि या r3 डिस्टेंस अछि या r4 डिस्टेंस अछि तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते होबो अबाउट द एक्सिस एटा मनकर एक्सिस होचे p अबाउट द एक्सिस pq टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते होबो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर ओके बट रेडियस ऑफ गायरेशन कोन कहूचे रेडियस ऑफ गायरेशन में होचे एक्सिस रो सेप्टिक डिस्टेंस एक्सिस रो सेप्टिक डिस्टेंस जेतिकी डिस्टेंस जदि हम स्क्वायर करिया पंचभुज चक्र एक्सिस रो जेतिकी डिस्टेंस एतिकी डिस्टेंस हम नवा जदि तार स्क्वायर करिबा हमें तार जदि हम स्क्वायर करिबा टोटल स्क्वायर करिबा आ सेटा तो जदि हम मास से मल्टीप्लाई करिया तार वैल्यू केते हबो जदि हम सब जा पार्टिकल को तार एक्चुअल डिस्टेंस से नहीं कि माने स्क्वायर करके सम करे दिजन जार वैल्यू इक्वल हबो माउथ लिखि दोछि लेकिन तमो मे बी क्लियर इंग्लिश में रेडियस ऑफ गायरेशन डेफिनेशन होछि the imagine not this is not imagine the radius or the distance of an point from the axis where all the mass of the body is supposed to be concentrated. The distance of a point from the axis where the mass of the body is supposed to be concentrated. That is the radius of gayration. For example, a object ro mane karo distance r te ku noche r radius of gyration. Radius of gyration noche r. So radius of gyration r jodi really a object ro total moment of inertia. It is a total moment of inertia about the axis pq kete habo jodi mane karo a object re n ta particle अछि n particle अछि तो n particle अछि और सब जा particle मास होछि m सब जा यूनिफॉर्म मास माने करा सब जा मास होछि m तो टोटल मास हो केते mn जति माने n नंबर ऑफ पार्टिकल छै अछंती ओके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स माने कर n ओके तो टोटल मास केते हो n into m आ सब जा पार्टिकल मास माने कर छ तो एडी radius of gyration definition answer a moment of inertia along the axis pq kete ho total mass la n into radius of gyration ro square that's it तो बे radius of gyration mo formula काढिया ए दिरा को इक्वल करा n m into radius of gyration ro square is equal to ए सब जा मास सेम m1 equal to m3 equal to m r1 square plus m
r2 square dot m r n square n m radius of gyration square is equal to mass टाको हमें सब जगह mass common लीजिए dot r n square okay a mass और a mass को divide हला तो r square equal to कितना लीजिए divided by n तो r value पड़ा इसका radius of gyration value divided by n okay এটা হচ্ছে radius of gyration ର formula বুকরে দেইনি বলতে রেডিয়াস অফ গাইরেশন অফ ফর্মুলা বাট তুমি এটা মনে রাখো বেসিক জিনিস রেডিয়াস অফ গাইরেশন মনে রাখিবার আছে মুভিটা क्या মনে রাখো এটা হচ্ছে বেসিক তো রেডিয়াস অফ গাইরেশন পরে ମୁଁ ତମ কাইনেটিক এনার্জি পড়ଉଛି নিউ টপিক kinetic energy of the object in rotational motion okay तो काइनेटिक एनर्जी बढ़िया भी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में ट्रांसलेशनल मोशन को कौन जानती है हाफ एम वी स्क्वायर ओके तो एडी मास तो अच्छी बट वेलोसिटी पाए मैं कौन जानती है रोटेशनल मोशन रे v इक्वल टू कोन ओमेगा आर ओमेगा माने कोन एंगुलर वेलोसिटी आर माने होची रेडियस एडा मनकर एक्सिस ऑब्जेक्ट एती डिस्टेंस बोलছে তার ডাউটার आर ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी तो एडी काइनेटिक एनर्जी केता हो हाफ एम v जगह ओमेगा आर लिखो ओमेगा आर रो स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर আমি কোন জানি এম আর স্কয়ার এর ভ্যালু কোন এটি দেখো এম আর স্কয়ার এম আর স্কয়ার ইকুয়াল টু কোন এম আর স্কয়ার ইকুয়াল টু কোন মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া তো এই ভ্যালুটা এটি মু পকে পারিবে তো কাইনেটিক এনার্জি র ভ্যালু কেতে আসিব হাফ আই ওমেগা কাইনেটিক এনার্জি ইন rotational motion okay kinetic energy in rotational motion equal to half into I into omega square ତାପରେ ଯଦି ମନେକର if special case ଗୋଟେ ନବା if omega equal to 1 kinetic energy equal to କେତେ ହବ half into I omega ର square 1 ର 1 so I equal to 2k so if any object is rotating at an angular speed of 1 radian per second if an object is rotating at the angular speed of 1 radian per second its kinetic energy is double of its kinetic energy is half of the moment of inertia here its kinetic energy is half of the moment of inertia so radius of gyration बुझला मो kinetic energy बुझला एबे हमें नेक्स्ट टॉपिक को जिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो डेरिवेशन एडा होची kinetic energy radius of gyration मो तुमको कहली kinetic energy तार डेरिवेशन एडी स्पेशल केस एबे हमें जिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स रे अभी यार डेरिवेशन बहुत ही इंपोर्टेंट तम बोर्ड एग्जाम पे ओके तो मैं फर्स्ट मु स्टार्ट करछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग सब ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी से तो मैं निजे मन रखियो ट्राई कर वेरी इंपोर्टेंट रिमेंबर रिंग गुड नबाद ओके रिंग एडा होछि माने कर तारा ये माने कर डिस्टेंस होछि आर डिस्टेंस होछि आर एक्सिस रे से रोटेट करछि तो एमानर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिया पे मु तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिया पे तुमको मु ट्रिक बता देथि कहितिला नै किंति काडे पे फिर से कह दोछि मु सब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट मन रख डेंसिटी इज इक्वल टू कोन मास अपॉन वॉल्यूम ओके जदि गोटे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम गिवन नै तो मास अपॉन एरिया भी नै तमे करि परिया जदि एरिया भी गिवन नै मास अपॉन लेंथ भी नै कि कर परिया ओके आ आरो पेरीमीटर कोन ए ऑब्जेक्ट का लेंथ कोन हो 2 पाई आर मास हमें जानना थी मो मन को रेडियस छोटा पार्टिकल होची डीएम क्या सब डीएम को नेकी कैलकुलेट करियो आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पाइ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू कोन हो डीएम द इंटीग्रेशन
सबुजा मास इंटीग्रेशन इनटू r स्क्वायर ओके तो dm रो वैल्यू हम पाखे रानी एटा होच मन यूनिफॉर्मली डेंस ऑब्जेक्ट मास वैल्यू हम तो dm इज इक्वल टू कोन हबो डेंसिटी इनटू 2 पाई ओके तो एबे डेंसिटी इनटू 2 पाई एबे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रे इंटीग्रेशन तब करबो डेंसिटी इनटू 2 पाई r रो r स्क्वायर ओके तो एटा को जतो तमे एटा को कंटिन्यू करी जिवो एटा को तमे एटा तुम इट लीड टू द डेरिवेशन ऑफ i इक्वल टू m r तो टिके लॉन्ग डेरिवेशन हबो सर तमे निजे प्रैक्टिस करियो पडियो आको लिमिट लगेबो एटी 0 इट लागियो 2 पाई ओके एटा को तमे जतो डिराइव करी जिवो आको सबोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रे केता आसियो i इक्वल टू m r जेमिति रिंग रो ए सब हम तुम गोटा लिखि दोछि आई रिंग रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ला m r स्क्वायर गोटे बाई गोटे होलो सिलिंडर रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काना हबो m r स्क्वायर कम पे ना होलो सिलिंडर और मास किछ नै एटा रिंग भले आगे गोटे रिंग कंसंट्रेट ही जाय गोटे रिंग 2 3 4 मल्टीपल रिंग रस स्तंभ पोचु होलो सिलिंडर सेट पे आरो जहा आरो बिता गोटे स्फीयर रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 by 5 mr स्क्वायर सब यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिया टेबल देछि बुक रे ए टेबल टा मन रखते ट्राई बहुत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आ ऊपर कंटीन्यूअसली आसे जहां भी न्यूमेरिकल्स आसे आप एडा को लेके तुमको सॉल्व करियार अछि ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो डेरिवेशन तमे निजे देखियो आउ किछि न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करो बुक रो तमे ना विदाउट न्यूमेरिकल्स किछि होबनी तमे जदि बोर्ड एग्जाम में भी फोकस करतो चलियो बोर्ड एग्जाम पे ए सब डेरिवेशन देखियो पड़े बट न्यूमेरिकल्स आज कल पकाते 5 मार्क्स रे क्वेश्चन और देछो 3 मार्क्स डेरिवेशन पे और 2 मार्क्स न्यूमेरिकल्स सो जतमे न्यूमेरिकल्स किछि साइड बाय साइड तमे जदि सॉल्व करतो बेटर क्लियर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया परे हम नेक्स्ट टॉपिक को जिबा काइनेमेटिक ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस तो हमें ट्रांसलेशनल मोशन रे पढ़ितले इन ट्रांसलेशनल मोशन हमें तीनटा इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ितले ना इक्वेशन ऑफ मोशन तीनटा मोशन रे इक्वेशन पढ़ितले कोन v इक्वल टू u प्लस at s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और कोन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ओके ये ट्रांसलेशन तो एक सेम जिनस अपन जदि एनालॉजी लगे कि रोटेशनल मोशन रे करिया तीनटा इक्वेशन हमें डेरिवेशन करियो ए सेम जिनस को तमे रोटेशनल मोशन रे एनालाइज कर एबी जे तो तुमको टिके टिके आईडिया लागे कि और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन एनालॉजी लागे तो आईडिया एक्सेलरेशन को एडी एनालॉजी पे ट्रांसलेशनल और मुनो चेक लिखुची रोटेशनल एक्सेलरेशन को ट्रांसलेशन रे ए रोटेशनल रे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी v रोटेशनल रे एंगुलर वेलोसिटी डिस्टेंस एडी s ये एडी रोटेशनल मोशन से कोन डिस्टेंस ट्रैवल करो केते एंगल ट्रैवल कला हम देखछन कि सेटा को जे तापरे मास पई एडी m रोटेशनल मोशन रे i काइनेटिक एनर्जी पई फार्मूला हाफ m v स्क्वायर एडी फार्मूला हाफ i ओमेगा स्क्वायर ओके तो आउ एडी टॉर्क एडी फोर्स पई एडी थिला खाली फोर्स एडी अछि टॉर्क टॉर्क इक्वल टू f इनटू r परपेंडिकुलर एडी मोमेंटम पई p थिला p इक्वल टू mv एडी एंगुलर मोमेंटम l इक्वल टू mvr ओके तो एमती एनालॉजी एबले तो तुम आईडिया लागे तो ए हिसाब रे हम रोटेशनल मोशन रे तीनटा इक्वेशन एठो हम लिखिया फर्स्ट इक्वेशन कोन थिला v इक्वल टू u प्लस at तो एडी v मन करा
W F मानकर अछि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इनटू टाइम एटा अछि फर्स्ट मोशन इक्वेशन सेकंड अछि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर s जगह रेडी हम कॉल करा थीटा इज इक्वल टू u माने इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर ओके ए जगह अल्फा रहला इनिशियल वेलोसिटी जगह हाफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिस्टेंस जगह मु थीटा लिख देले तापर थर्ड मोशन पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा ठीक ए तीनटा इक्वेशन मोशन रो फाइव कोटा रोटेशनल मोशन ए जे तू नहीं कि हमु न्यूमेरिकल सॉल्व केतरा करियर अछि या तो मु तुमको फर्स्ट मु गोटे एग्जांपल दोछि टी तीनटा मोशन रो इक्वेशन बाहर पड़ला और एनालॉजी हम सिखि देली मु तुमु एबे मु तुमु एग्जांपल हम करिया एग्जांपल नंबर 6.10 तुम कोछि obtain the equation 6.36 6.36 माने एटा आर से हम डेरिवेशन करिया पई होइछि माने ए जो wf इक्वल टू wi प्लस i प्लस अल्फा टी आर में डेरिवेशन करिया अछि तो एटा डेरिवेशन करिया देखो बे हमें कोन जानते एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू कोन d ओमेगा बाय dt क्या तो जदि एटा को मु जदि मल्टीप्लाई करी एपडो नै जिबी d ओमेगा टा एपडो असला इज इक्वल टू अल्फा dt इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स d ओमेगा रे इंटीग्रेशन करली एपडे अल्फा dt रे इंटीग्रेशन कर d ओमेगा रे इंटीग्रेशन करले कोन आसीबो ओमेगा अल्फा dt रे इंटीग्रेशन करले कोन हबो अल्फा t प्लस गोटे कांस्टेंट t बट तमे तबे कयो एडी तो इनिशियल वेलोसिटी लिखथिलो तू बट एडी तो तमरा इनिशियल वेलोसिटी आसलानी सर तबे कोन करे एडी हमको कैरियर वैल्यू अछि c रो वैल्यू एडी कांस्टेंट c अछि मो पाखे कांस्टेंट c रो वैल्यू फाइंड अछि इफ t इक्वल टू 0 t इक्वल टू कोन आसीबो ओमेगा नॉट फाइंड को हम इनिशियल ओमेगा वैल्यू कहि परिया तो c रो वैल्यू आसला तो ओमेगा फाइनल एडा যদি ओमेगा फाइनल लिखती ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा t नीला डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन से रखिला ओमेगा नॉट लिखती ओमेगा i लिखती सेम जिंस ओके तो डेरिवेशन करेला डेरिवेशन कर देली नेक्स्ट एग्जांपल को हम मूव करिया एग्जांपल नंबर 6.11 एग्जांपल नंबर 6.11 रे मत से कोन पूछे द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds okay ओके ओमेगा इंक्रीज फ्रॉम ओमेगा आई के देछि फर्स्ट जहां से वैल्यू देछि वो लिख के ट्राई कर आरपीएम ओमेगा फाइनल के दी देछि 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड तो ओमेगा आई रो सब ओमेगा माने एंगुलर वेलोसिटी रो अब एसआई यूनिट होछि रेडियन पर सेकंड मात्रा एडी रेडियन पर सेकंड रा एडा को कन्वर्ट कर रहल छै रेडियन पर सेकंड की है 60 सेकंड्स रे 1 मिनट माने 60 सेकंड 6 सेकंड से केते रोटेट करछि 1200 रोटेशन 1200 रोटेशन of meaning का 1200 into 2 theta angle 2 theta माने 360 डिग्री 360 रेडियन के कवर कोच तो गोटे सेकंड से केते ट्रैवल कोच 1200 into 2 pi divided by 6 तक 60 120 20 20 20 into 2 pi equal to 40 रेडियन per second एटा इक्वल टू वैल्यू के तार 40 pi रेडियन पर सेकंड सेम से 3120 को मूल कन्वर्ट करी 60 सेकंड से केते ट्रैवल करछे 3120 रोटेशन 3120 रोटेशन ऑफ मीनिंग गाना 3120 into 2 pi रेडियन एंगल ट्रैवल करछे तो 1 सेकंड से केते ट्रैवल करिया 3120 into 2 pi by 60 तो वैल्यू केते आसीबो एडा काटो तुजे काटो केते आसीबो 104 pi रेडियन पर सेकंड 104 pi रेडियन पर सेकंड तमो एडी फर्स्ट क्वेश्चन कोन होई व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन जे काडे रच एंगुलर एक्सेलरेशन माने अल्फा रो वैल्यू काडे रच अल्फा इक्वल टू कोन हम जानछन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम माने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम जिंदी ट्रांसलेशन मोशन कोते रोटेशनल मोशन रे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एलियन पाखे अछि केते 1045 माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वैल्यू 45 डिवाइडेड बाय टाइम होचे 16 सेकंड एदिरा डिवाइड कले केता 64 पाई डिवाइडेड बाय 10 is equal to alpha is equal to 4 pi radian divided square 4 pi radian ro square. Okay, next question gana, how many revolutions does the engine make during this time? केतरा से revolution करछि ई टाइम माने से कोन पछरछि केतरा रोटेशन, how many rotations. Okay, तो टोटल रोटेशन पे हमें कोन करि परिया अगर तीनटा इक्वेशन अछि तीनटा इक्वेशन रो कोड इक्वेशन बक्या अछि तो टोटल रोटेशन पे हम कोन करि परिया टोटल से केती एंगल ट्रैवल कला केती एंगल जदि ट्रैवल कला हम जान देबे ताइ हम कर दे परिया रोटेशन दाइरो टोटल से एंगल केती ट्रैवल कला एंगल ट्रैवल पे कोन करिया हमें थीटा थीटा इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर अच्छे तो थीटा इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी केतला 45 into time केते 16 सेकंड प्लस हाफ into अल्फा वैल्यू केते 4 पाई टाइम रो स्क्वायर केते 16 रो स्क्वायर. ओके तो 4 पाई को इधर करले 2 पाई 640 पाई प्लस 16 रो स्क्वायर केते 256 256 into 2 पाई केते हो 5125 टोटल 1152 रेडियन. ओके तो एते कि सीएल एंगल ट्रैवल करछि एती एंगल से ट्रैवल करछि हम कोन जानचंदी वन रोटेशन रे गोटे बॉडी केते एंगल ट्रैवल करे 2 पाई रेडियन तार अर्थ कोन 1 रेडियन ट्रैवल करिया पय ताको केते रोटेशन दरकार 1/2 पाई रोटेशन तो जदि जण 1152 पाई रेडियन ट्रैवल करछि से केते एंगल ट्रैवल केते रोटेशन करथियो 1152 to 1/2 5 I cancel 3 को एतर डिवाइड करले 576. ओके तो 576 का टोटल रोटेशन. ओके तो एबे जे हमें कोन पढ़ले और तुम टिके रिवाइज तमे कर दो एबे आज हमें कोन पढ़ले फर्स्ट टॉपिक आज हमें पढ़ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट टॉपिक आज हमें पढ़ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी तापर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन कोन सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन कोन रिवाइज करछि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेफिनेशन होचे गुड ऑब्जेक्ट an imaginary point on an object where the mass of the whole body is concentrated. तो भी हम जदि ऑब्जेक्ट नोचनी तर सब जगह मास को जगह कंसंट्रेट थाउची सेटा को जे तार सेंटर ऑफ ग्रेविटी बट यूनिफॉर्म मास रे सब बेले सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम जगह रहे बट इन नॉन यूनिफॉर्म मास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी केबे भी सेम पॉइंट लाइक करें पॉइंट भी लिख दियो उन्हें नॉन यूनिफॉर्म मास सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी never lie on a single point. Very important. Okay. But a uniform mass रे सब बोले center of mass और center of gravity same point like uniform mass, center of mass and center of gravity always on same point. How would one important point quickly? Torque applied if an object is in equilibrium, if the object is in rest, torque applied on the mass around the center of gravity is always zero. Okay, torque applied on the center of mass, center of gravity is always zero. मतलब वो calculate भी करेगी देखे थे. तापर center of mass, center of gravity आपको कौन देखले? Difference. Center of mass किंदे different center of gravity लो. जदि हम लोग small object नबा तर center of mass, center of gravity सब वाले same point रहा. पर जदि हम लोग बड़ा object नबा तो gravity difference आसीबो. Center of gravity तौल से करेगा. Center of gravity कम वैसे g ऊपर dependent है. But mass तक लेवल g ऊपर dependent नहीं होता. बड़े से मिड पॉइंट ही रहिबो एलिजिबिलिटी सेंटर ऑफ मास ता मिड पॉइंट ही रहिला बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ता तळु करियला. ओके इट इज देयर इज अ पॉइंट डिफरेंट पॉइंट लाइक कला सेंटर ऑफ पॉइंट मास द डिफरेंस बुझा पड़ला सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी. नेक्स्ट हम वो एग्जांपल करिले यार तापर हम पढ़ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने कोन द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इट्स रोटेशनल मोशन.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन आ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला हम पढ़ले आ गोटे मु ऑब्जेक्ट जिंस भूली जाइଥିଲି कहया ପାଇଁ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एटा मु तुम फर्स्ट लेक्चर रे कहଥିଲି होपफुली तुम किछन मन थो आउ थरे मु कहि दोची डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी कौन पे कौन पे ये देखो साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी जब तार शेप टा रिंग रहला तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर जब तार शेप टा डिस्क रहला तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर जब तार स्फीयर रहला तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m r स्क्वायर तो साइज आउ शेप ऊपर डिपेंड कर सेकंड मास मास ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड करछ तार जेहेतु मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे होछ m r स्क्वायर फार्मूला री अछि तो m मास होछ थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस distance from the axis or axis of rotation बेड़ा में कोई करिया r अछि r टा कोन distance from the axis ना तो ऊपर डिपेंड करछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन जिंस ऊपर डिपेंड कर ठीक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुला कोन डेफिनेशन कोन थला तार एबिलिटी टू रेजिस्ट द रोटेशनल मोशन inherent property of the object to resist its rotational motion जरा फॉर्मूला ला ये ठीक तब रेडियस ऑफ गायरेशन विषय रो कहली तार फॉर्मूला तापरे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन तार डेरिवेशन तुमको कहली i k इक्वल टू अल्फा i ऐसे हाफ i ओमेगा स्क्वायर तामरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग रो डेरिवेशन देखली और कितना ऑब्जेक्ट रो स्पेशल ऑब्जेक्ट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मन रखिया में तुमको कहली सब यार तुम मन ठीक तापरे काइनेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन मोशन तीनटा इक्वेशन तार डेरिवेशन आउ ताको नै कि रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निजे सॉल्व करिया ओके आज मु तुमको लास्ट टॉपिक मु एनालॉजी डा को आवर्तर कहि दोछि आ वर्क डन बाय ए टॉप आज लास्ट टॉपिक बाय नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़िया मु तो नेक्स्ट लेक्चर एग्जांपल करी आ एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस सेडा कहिया तापर एक्सरसाइज करली नेक्स्ट लेक्चर रो हमें एक्सरसाइज रो क्वेश्चन करबा स्टार्ट करिया ओके कंपैरिजन अब रोटेशनल मोशन आ ट्रांसलेशनल मोशन देखो लिनियर मोशन रे हमें डिस्प्लेसमेंट जोड़ा को एस कहतुले एडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एडी मु तुम लिखी भी कहि सारथिले आउ थरे देखो थीटा वेलोसिटी को ds by dt एडी एंगुलर वेलोसिटी होची ओमेगा d थीटा by dt ओमेगा इक्वल टू d थीटा by dt एडी से v इक्वल टू ds by dt होतला dx by dt ओके एक्सेलरेशन एडी कोन हे जुओ एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू dp by dt d d ओमेगा by dt एडी जेडा मास एडी सेडा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क फोर्स और टॉर्क एनालॉजी फोर्स इक्वल टू ma टॉर्क इक्वल टू i अल्फा टॉर्क इक्वल टू f/1 भी हम लिख परिया आ उडे टॉर्क रो फार्मूला में कोन सिखले i अल्फा सेम सेम एंगुलर मोमेंटम में कोन लिख परिया एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला कोन mv m रो एनालॉजी एनालॉगस कोन i v रो ओमेगा तो इक्वल टू i ओमेगा नेक्स्ट फार्मूला देख फोर्स इक्वल टू ma थिला टॉर्क इक्वल टू i अल्फा वर्क डन इक्वल टू f into ds फोर्स into डिस्प्लेसमेंट थिला सेम सेम रोटेशनल मोशन रे फोर्स जगह रेडी कोन आसीबो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट जगह कोन आसीबो d थीटा चार जोड़ा एनालॉजी सेटा को जस्ट पुट इन द फार्मूला ओके काइनेटिक एनर्जी का हम कोन थिला हाफ mv स्क्वायर m जगह में कोन लिख देबा i v जगह ओमेगा चल पावर इक्वल टू फोर्स into वेलोसिटी पावर इक्वल टू फोर्स into वेलोसिटी फोर्स एनालॉजी कोन टॉर्क v एनालॉजी कोन ओमेगा तो पावर इक्वल टू टॉर्क into एंगुलर वेलोसिटी लिनियर मोमेंटम पाई मास into वेलोसिटी थिला एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया into लेवल ओके तो एनालॉजी एनालॉजी मन बुझा पड़ला ए एनालॉजी हिसाब रे सबटा रेतुजा फॉर्मूला अछि से लेता तापर आबे मु तुमडी वर्क डन बाय टॉर्क कहि दोछि लास्ट टॉपिक आजरो ओके एटा होछि मनकर गोटे ऑब्जेक्ट ताको फोर्स एपडे मु देली एफ रे डिस्टेंस होछि r1 डिस्टेंस अछि एक्सिस रो एडी टॉर्क रो फॉर्मूला कोन हे जो f sin थीटा सॉरी r1 क्रॉस f एडी f रो
को फोर्स टा ऑब्जेक्ट को रोटेशन रे हेल्प करू f रो sin कंपोनेंट तो टॉर्क इक्वल टू r f sin क्या तो हमें वर्क डन इक्वल टू कौन जानछन फार्मूला वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जानछन जदि गोटे ऑब्जेक्ट आईडी से गोटे स्मॉल एंगल रे ट्रैवल कर फॉर एग्जांपल ये गोटे स्मॉल एंगल डी से ट्रैवल कला इट ds ओके सब हम जानछन एंगल इक्वल टू r upon radius in case of small angle तो एंगल मन d थीटा r के दिला ds by radius r1 तो ds रो फार्मूला डी कोन है d थीटा by d थीटा into r d थीटा into r1 तो सेम फार्मूला को मु वर्क डन दे पका फोर्स into ds रो फार्मूला कोन आतला d थीटा r1 ओके इंटीग्रेशन करो dw रो इंटीग्रेशन कले कोन आसी वर्क डन into f dot d theta dot r1 right माने मल्टीप्लिकेशन f into r1 रो फार्मूला कोन टॉर्क तो वर्क डन इक्वल टू टॉर्क टू d theta ठीक तो वर्क डन इक्वल हम लिखते रहे टॉर्क into थीटा ठीक टॉर्क into एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होची वर्क डन सेम सिंगली जदि मु पावर काढियर अछि एटा मु तुम आ गुत्र कहि लेक्चर आउ तो कहि पावर काढियर तो हम कोन करछन वर्क डन बाय टाइम तो हम पाखरे रेडी अछि dw is equal to f r d theta differentiate कर divide by dt डिवाइड करो dw को dt डिवाइड करो fr d थीटा को dt रे डिवाइड करो dw by dt कले कोन आसबो पावर आस d थीटा by dt रो वैल्यू कोन ओमेगा ओमेगा इक्वल टू d थीटा by dt कहिथिले आगरो तो पावर ऑफ हम आसी गला fr into ओमेगा fr इक्वल टू हम कोन लिखबे एटा टॉर्क पावर इक्वल टू टॉर्क into ओमेगा एनालॉजी रे देखि दियो अथरे डेरिवेशन है कलो पावर इक्वल टू टॉर्क into ओमेगा पावर इक्वल टू टॉर्क into ओमेगा तो ए टाइप रो एनालॉजी गुडा को मु डिराइव करिया रो पे तमो शिक्षे देली ठीक तो मु नेक्स्ट लेक्चर रे मु अबे एक स्टार्ट करबी एग्जांपल रो एग्जांपल नंबर 6.1 रो मु स्टार्ट करबे एग्जांपल करिया तापर एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस तापर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चैप्टर सरिया मैं नेक्स्ट लेक्चर रे फर्स्ट हाफ रे तमो ए सब टॉपिक विषय एटा रेस्ट ऑफ द टॉपिक वेला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन फिक्स्ड एक्सिस कोई भी फर्स्ट हाफ रे तती कहला पर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करिवो एक्सरसाइज रा क्वेश्चन केतरा एक्सरसाइज रा क्वेश्चन अछि 17टा क्वेश्चन अछि नेक्स्ट लेक्चर हमें ट्राई करिया 17टा क्वेश्चन करिया पे तापर आउट नॉलेज सेशन में भी जारे मु तमो कहि आ बाकी रेस्ट ऑफ द so guys till then study thank you